lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. Oh, I know that you've been waiting. It's in these moments. What's up everyone, my name is Vikas. Welcome back to the channel. It's a beautiful day and a beautiful life. Hope you guys are doing fine. So guys, today I am going with my friends on a ride. So today we are going to explore Malshej Ghat and एक waterfall है कालू waterfall करके guys. So वो भी हम लोग explore करने वाले हैं और बहुत सारे monsoon videos का plan है, तो बहुत सारे videos भी आने वाले चैनल पे फिर से. और आपने अभी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, बहुत अमेजिंग वीडियो है. सो गाइस, बिना कोई खटपट शुरू करते झटपट. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, finally we have reached Malshej Ghat. You can see weather बहुत सुपर होके रखा है, पूरा foggy हो गया है weather. और बारिश, पहले थोड़ी बारिश थी तो अभी थोड़ा बारिश रुक गया. You can see around me पूरा जो भी ये लोकेशन है पूरा foggy है, जैसे आपने वीडियो में देखा. बहुत सुपर होके रखा है गाइस वेदर. वहाँ पे MTDC का स्टे है और ये लोकेशन, ये जो लोकेशन है ये बहुत सुपर लोकेशन है. यू कैन सी अराउंड मी एवरीवेयर इट्स ग्रीनरी एंड सब जगह पे foggy है. मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे है और हम लोग आगे जा रहे हैं कालू वाटरफॉल. एक्चुअली हमें लोकेशन नहीं मिल रहा है कालू वाटरफॉल का, बट वी विल सर्च एंड गो ओवर देयर. सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी और जाते हैं कालू वाटरफॉल के लिए. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real, and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. I know for real, I'm the deal. So please set me free. सो गाइस, आप देख सक रहे हो कि रास्ते जो है यहाँ पे बहुत ख़राब है. मैं तो आपको अवॉइड ही करूँगा कि आप ये ऐसे रास्ते से आने के लिए. गाइस ये देखो, तो गाइस आप हमारी बाइक की हालत देख सकते हो. और ये हमारी प्यारी हिमालयन. तो गाइस आई विल सजेस्ट कि आप चल के आइए. बाइक लेके तो आप ऑफ रोडिंग करने का मत सोचिए यहाँ पे, बिकॉज हमारा बाइक ऑलरेडी 3-4 बार गिर चुका है. पर हमें कैसे, हमने आधे रास्ते पे अभी बाइक छोड़ नहीं सकते, तो हमें तो पूरा ही पहुंचाना पड़ेगा. How was off-roading?
फाइनली वी हैव रीच। अभी थोड़ा सा ट्रैक है, आप देख सकते हो सामने, एक्चुअली नहीं विजिबल नहीं है, आपको थोड़ा और क्लोज जाके दिखाता हूँ। प्लीज स्ट्रगल के बाद एटलीस्ट वी हैव रीच। आप देख सकते हो वहाँ पे नदी बह रही है, जो दिखेगी नहीं बिकॉज इतना बारिश नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इतना फ्लो नहीं है पानी का, बट दैट्स ओके। अभी थोड़ा देखते हैं आगे जाके। एक वेदर तो बहुत सही होके रखा है एंड इट स्टार्टेड रेनिंग नाउ, तो लेट्स गो अहेड एंड सी। इतना इजी नहीं था यहाँ पे पहुँचने के लिए, इट इज़ अ बिट ऑफ स्ट्रगल हो गया। इतना फ्लो नहीं है पानी का बिकॉज इतनी बारिश नहीं हुई यहाँ पे, बट देन ऑल्सो यू कैन सी कि पानी रिवर्स हो रहा है। लेट मी गिव यू द क्लोज व्यू ऑफ दिस कल्लू वाटरफॉल। सो यू कैन सी राइट बिसाइड मी, दैट इज़ द कल्लू वाटरफॉल। एक्चुअली वो भी एक पॉइंट है जहाँ पे लोग बहुत जाते हैं और वहाँ से आपको ये वाटरफॉल पूरा एक्चुअली दिखता है कि और गाइस बहुत डीप है, आप देख सकते हो। यू कैन सी कितना डीप है नीचे, so be careful whenever you visit this place. Explore more of this Kallu waterfall. अभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर भी देखते हैं क्या सीन है, ऊपर कैसा व्यू है। तो लेट्स गो अप। व्यू बहुत सही है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंडेड यू टू कम एंड चेक दिस। बट सीन यहाँ पे एक ही ख़राब है, आप बाइक लेके नहीं आ सकते हो। अगर बाइक लाते हो तो बहुत स्लिपरी है, तो वो मानसून में तो बहुत स्लिपरी है, तो बाइक का बहुत चांसेस है कि स्लिप होना और गिरना। और बाकी आप चल के आ सकते हो, बट इट इज़ वेरी फार। तो आप देख सकते हैं कितना स्लीप रहता है, सो बी केयरफुल। और रास्ते भी बहुत स्लीपरी है, तो बी केयरफुल बिकॉज यहाँ से आप स्लीप हुए ना तो आप डायरेक्ट नीचे ही मिलोगे, नीचे भी नहीं मिलोगे, सीधा ऊपर मिलोगे। सो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड बिकॉज आपके एक मजाक में किसी जान जा सकती है। तो फाइनली आई हैव रीच्ड नाउ, यहाँ से आपका भी जैसे आपने कालू वाटरफॉल तो देख लिया, बट कालू वाटरफॉल में और एक हिडन वाटरफॉल है, तो लेट मी शो यू। तो काइंड ऑफ व्यू गाइस, आप देखो। तो गाइस मुझे पता नहीं कौन सा वाटरफॉल है, बट द व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल इज सो अमेजिंग। यू कैन सी राइट नाउ, इट्स बिहाइंड मी। तो ये जो व्यू है गाइस, बहुत सुपर व्यू है। थोड़ा डेंजर भी है बिकॉज नीचे आप देख सकते हो कि पूरा खाई है, तो थोड़ा रिस्की भी है, बट दिस वाटरफॉल इज वर्थ विजिटिंग गाइस, बहुत सही है। तो लेट्स एंजॉय सम सिनेमैटिक। Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यस देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और गाइस सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ डू दैट शेयर। तो गाइस अभी मुंबई के लिए निकलना है, और गाइस बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और हो सकता है तो प्लीज़ ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस आउट।